Good evening, students. Happy Sunday to you, to all of you. So, in today's session, we will be continuing, we will be learning more concepts about management of working capital. In our last two sessions of this chapter, what did we learn? We learned how to estimate the working capital required. We learned the basic meaning of working capital. We learned the standard assumptions to be followed in this chapter in absence of specified information. We also learned how to prepare the format of working capital, and the format of working capital is based on source document called cost sheet. So cost sheet कैसे बनती है वो भी हमने सीखा. Then in our last session we learned the concept of operating cycle. What was operating cycle? It is a simple process of converting cash back into cash. कैश को कैश में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल. The time taken to complete this process, कैश को कैश में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इज ऑपरेटिंग साइकिल. ये प्रोसेस को जितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में उसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल की फॉर्मूला इज नथिंग बट आर एम होल्डिंग पीरियड प्लस डब्ल्यू आई पी होल्डिंग पीरियड प्लस एफ जी होल्डिंग पीरियड प्लस एसीपी लेस एपीपी. ठीक है. एंड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, then the formula is 365 12 52 divided by operating cycle. ठीक है. So this was operating cycle का thing. Now how to calculate RM holding period? So the formula was average RM stock divided by raw material consumption into 365 12 52. WIP is based on cost of production. So WIP holding period is average WIP stock divided by cost of production into 365 12 52. Likewise, we know that FG is based on COGS. तो FG होल्डिंग पीरियड की फॉर्मूला बन जाती है एवरेज FG स्टॉक डिवाइड बाय COGS इंटू 365 12 52. करेक्ट. फिर हम आते हैं एसीपी में. एसीपी एपीपी यू हैव ऑलरेडी लर्न इन रेशियोज. इट इज नथिंग बट एवरेज डेटर्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स into 365 12 52. And likewise for APP, we know payables are based on credit purchases. So average creditors upon net credit purchase into 365 12 52. ठीक है. After that we also saw how to finance the working capital that was estimated. तो उसमें हमने देखा कि working capital is divided, is categorized into two types. One is permanent working capital. It means that working capital which will be needed in the business till its existence. पूरे लाइफ टाइम तक आपको ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल लगेगा. टेम्पररी वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. इट इज नीडेड ड्यूरिंग पीक सीजन. ठीक है. सो कहानी में कुछ ऐसा था कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल यू रेज इट थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेस as a conservative businessman, and temporary working capital, since it is needed for temporary short period of time, you raise it through short term sources. Understood. फिर हमने कल ऑपरेटिंग साइकिल पे कुछ क्वेश्चंस करे थे एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज thoroughly done. After that we saw one very comprehensive question where the standard assumption that all activities accrue evenly throughout the year was not holding true, especially for opening and closing stock. उस क्वेश्चन में तीन चार और यूनिक पॉइंट थे, वो भी हमने कल कवर किया. Now moving forward in today's session, let me just open the module. Let me share my screen and
In today's session, we would be learning about receivables management. That is, managing your customers in such a way that it generates maximum net benefit to your organization. So, today's session, we would be learning about the concept of receivables management. What is the simple meaning? Again, our flow of learning, pattern of learning will remain same. First, we will understand the meaning of the term. Second, इस concept का learning objective क्या है? इस सब chapter का learning objective. What is the concept? What is the objective of receivables management? क्या सीखेंगे हम? वो देखेंगे and then we will solve some practical problem. ठीक है? So, can I say meaning is very simple. It is in the name itself. नाम क्या है? Receivables. Can I say receivables is nothing but they are your customers? Yes or no? Debtors. And management means what? Management is a decision making process. You have learned this in the very first introduction to FM chapter. Management means what? आपको डिसीजन लेना है. किस चीज का डिसीजन लेना है? इन दिस चैप्टर वी हैव टू टेक डिसीजन with respect to our customers. Are you following? So receivables management simply means managing your customers, managing your debtors. Simply means managing your customers. And can I say management is nothing but a decision making process? Management is nothing but a decision मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हमें एज अ फाइनेंशियल मैनेजर और एज अ सीएफओ वी हैव टू टेक सम डिसीजन. कौन से डिसीजन लेने हैं? तो हियर इन दिस चैप्टर सीएफओ और फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू डिसाइड what should be the credit policy of the company. क्या डिसीजन लेना है कि what should be the optimum credit period that should be given to the customers. Are you getting this? Optimum credit policy of the company. डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में क्या सीखा था? What is the ideal optimum dividend policy of the company. उसका डिसीजन मेकिंग was dividend decision. Receivables management में what should be the optimum credit policy of the company, that is receivables management. Optimum credit policy means कितना क्रेडिट मुझे मेरे कस्टमर को देना चाहिए. क्या 20 डेज का क्रेडिट इज द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी? 30 डेज का दू क्रेडिट, 60 डेज का दू, 90 डेज का दू, कुछ ना दू? What is the ideal credit policy? Are you following? In everyone understanding? क्या डिसीजन लेना है? डिसीजन मेकिंग ऑफ what should be the optimum credit policy of the company. In other words, can I say optimum credit policy is nothing but what should be the credit period that I should give to my customers? That is ideal credit period
that should be given to the customers. तो इसका डिसीजन मेकिंग वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. ठीक है. एग्जाम्पल 20 days का पॉलिसी, 20 days का क्रेडिट दू, क्या इट इज बेस्ट फॉर द कंपनी? 30 days का दू, 45 days का दू, 90 days का दू? What is the ideal credit policy? Are you getting this? So इसमें से we have to select the best one. The ideal credit policy obviously would be that policy that generates maximum, that creates maximum benefit to the company. Yes or no? जिसमें कंपनी का फायदा सबसे ज्यादा, we will select that policy. Simple. So can I say in other words, इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव बन गया. लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1, evaluation of different credit policies and selecting the best one. Followed? So बातों में we are entering into the learning objective of this chapter. Learning objective क्या बन गया? Learning objective number 1, evaluation of different credit policies. Evaluation of different credit policies and selecting the best one. Are you following? This is objective number 1. It means आपको क्वेश्चन में different alternatives of credit period दिए होंगे and question will ask you इसमें से कंपनी को कौन सा क्रेडिट पीरियड सिलेक्ट करना चाहिए. So we will select the best one. The best one would be that जो मैक्सिमम बेनिफिट जनरेट करके दे कंपनी को. जिस पॉलिसी में, जिस क्रेडिट पीरियड में फायदा सबसे ज्यादा, we will select that one. Correct? So this is learning objective number 1. Evaluation of different credit policies and selecting the best one. Best one कौन सा होगा? Can I say best one would be that credit policy, that policy which generates maximum net benefit to the company. Which generates maximum net benefit is nothing but maximum फायदा. Benefit is nothing but फायदा. Which generates maximum net benefit to the company. ठीक है? So this is learning objective number 1 of this chapter, receivables management. इसके बाद there is a small concept called factoring, or you can say factoring arrangement. What is factoring? What do you mean by the term factoring? How does this factoring process work? ये हम इस चैप्टर में, इस सेशन में सीखेंगे. ठीक है? But for now, let's focus on learning objective number 1. Evaluating different credit policies and selecting the best one. बोलो, any doubts still here, students? Why I am not able to see the chats? Anyways. ठीक है, चलो let's start. So can I say learning objective number 1, we have to evaluate as a financial manager different alternatives of credit period and selecting the best one. And best one कौन सा होगा? जो मैक्सिमम नेट बेनिफिट जनरेट करके दे. नाउ आपके दिमाग में छोटा क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर मैक्सिमम नेट बेनिफिट वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो क्या होता है? तो मैक्सिमम नेट बेनिफिट इज नथिंग बट ग्रॉस बेनिफिट
less cost, or you can say cost or risks. ठीक है? So again, same process. Gross duration less deduction, you will get net duration. Gross taxable income less deductions, net taxable income. Gross benefit less deduction in the form of cost, you will get net benefit. ठीक है? Understood? अब ये benefit ये क्या है? Which benefit are you talking about, sir? So let's understand benefit मतलब क्या. यहाँ पे हम कौन से बेनिफिट की बात कर रहे हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. सबसे पहले व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर. कैन आई से नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. यस और नो. रिसीवेबल्स मींस डेटर्स और यू कैन से कस्टमर्स. तो ये डेटर्स का जन्म कैसे होता है. हाउ आर डेटर्स born. Can I say in financial world, in real world, how they are born, it is irrelevant for us. But in financial world, debtors are born only if credit sales are there. Are you getting it? Credit sales नहीं होता तो डेटर्स का इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में जन्म नहीं होता. रियल वर्ल्ड में होता बट फाइनेंशियल वर्ल्ड में उनका जन्म नहीं होता. आर यू फॉलोइंग. सो डेटर्स exist into the financial world if there are credit sales. ठीक है. Now I am giving you an example. थोड़ा सोच के बताना. Let's say there are two companies. One is Dweep Limited and one is Vyom Limited. ठीक है. Now Dweep Limited is that company which does not give any credit to the customers. 0 days means आज आप मेरे से गुड्स खरीद रहे हो तो आज ही पेमेंट करना पड़ेगा. Vyom Limited on the other hand is giving 30 days of credit to its customers. Means if you are buying the goods today, you have to pay after 30 days. तो बोलो किसका सेल्स ज्यादा होगा, किसका टर्नओवर, कस्टमर्स किसके पास ज्यादा जाएंगे, द्वीप लिमिटेड की व्योम लिमिटेड. Everyone may have not. Obviously Vyom Limited, because that company is giving credit to its customers. So when I say credit sales है तो फायदा is it will increase your turnover and in turn it will increase your profit. Understood? So when I say credit sales है तो उसका ग्रॉस बेनिफिट फायदा क्या है क्रेडिट सेल्स का. The benefit is it will increase the sales of your company and अगर sales बढ़ा तो in turn my net profit will also increase. Are you following everyone? बोलो फायदे में कुछ डाउट है, फायदे में कुछ क्वेश्चन है आपको. So debtors first of all is born only when sales are on credit. अगर credit sales है, more the credit period, more the sales, more the profit. So can I say gross benefit of higher credit period or of credit sales is it will increase your profit of the company. Yes or no? But जहां जहां फायदा आते हैं वहां वहां साथ में कुछ कॉस्ट, कुछ रिस्क आएंगे. आर यू फॉलोइंग? सो विथ ग्रॉस बेनिफिट comes some cost or risk. Risk in the form of, let's take different examples and let's mark our different cost. ठीक है. Okay, number one again Dweep Limited, Vyom Limited. Dweep Limited 0 days credit, Vyom Limited 30 days credit. Now tell me, can I say Vyom Limited को to remind the customers for payments on time, उस वो कंपनी को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन टीम रखनी पड़ेगी कॉल्ड द रिसीवेबल्स टीम. यस और नो? 2 आदमी ऑन सैलरी, आई हैव टू हायर देम एंड
Their task would be continuous sending emails, reminders, calls to the customers that your payment is due. Please make the payment. Please make the payment. Your payment is due after 10 days. Please make the payment. So can I say credit sales है तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा? यस और नो? वो कैश सेल्स में होता क्या? नहीं होता भाई. आज पैसे दो फिर ही आई विल सेल यू द गुड्स. सो कैन आई से आई डोंट नीड टू हायर एनी स्पेसिफिक employee who does the administration of receivables work. Are you following? इस केस में वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली आई वुड हैव टू हायर एटलीस्ट 2 employees considering a substantial turnover of my company. Are you getting this? So can I say credit sales है तो one cost is administration cost. Are you following? So credit sales debtors है तो फायदा है कि it will increase your profit. बट नुकसान क्या है कि साथ में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बेयर करने की आप तैयारी कर लो. Are you following? Because regular intervals पे I will have to send emails for payment reminders, for invoice collections. I will have to send some person to my customer's office to collect the payment. So ये सब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा. अंडरस्टूड? सेकेंड बताओ बैड डेट्स किस में होगा? द्वीप लिमिटेड में होगा कि व्योम लिमिटेड में होगा? टेल मी. बैड डेट्स कह रहे से क्रेडिट सेल्स है तो बैड डेट्स के भी चांसेस है. Yes or no? A company having higher credit, giving more credit to its customer, higher the chances of bad debts. But क्या द्वीप लिमिटेड में bad debts के चांस है? No, because I will get full payment. Only then I will sell the goods. But यहाँ bad debts भी incur होंगे. So can I say if credit sales are there, be ready to bear bad debts as well. Bad debts cost. Understood? Any doubts still here? So we are just noting down कि क्रेडिट सेल्स है तो फायदे क्या है, सामने उसके नुकसान क्या है, कॉस्ट क्या है, रिस्क क्या है. ठीक है. नंबर 3 कलेक्शन कॉस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शन कॉस्ट? Collection cost is nothing but a cost that you pay for collecting the amount from your receivables. Again, a small example. Let's say there is a bank who has granted loan to you. So let's say Mr. A. So बैंक ने Mr. A को लोन दिया है. So can I say Mr. A is customer of the bank? Yes or no? Mr. A becomes the customer of the bank. Now, practically in real world क्या होता है पता है? Mr. A has to pay, let's say this is a home loan for example, or business loan or personal loan. Can I say Mr. A को every month EMI pay करना पड़ेगा? Are you getting this? Mr. A has to regularly every month pay EMI for repayment of loan. Correct? Now, since last 6 months, all the EMIs have been filled. It means Mr. A ने एक भी EMI पे नहीं किया है since last 6 months. So when I say बैंक के बुक्स में ये NPA के अंडर रजिस्टर हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट के अंडर रजिस्टर हो जाएगा. करेक्ट? बट क्या ये बैंक ऐसे ही पैसे जाने देगी अपने? Can I say bank will make judicious efforts to recollect all the money from Mr. A? ऐसे ही पैसे जाने नहीं देगी. It will make very judicious efforts to collect the money to recover all the EMI payments that are not paid plus the future EMI payments as well. Are you following? So bank क्या ये काम खुद करेगी? No. What does bank do? Bank does not have such time.
to recover the money from Mr. A. What does bank do? Bank gives this recovery task to whom? Recovery agents. ये रिकवरी का काम किसको सौंप देगी बैंक? रिकवरी एजेंट्स को. There are many recovery agents established, incorporated that helps the bank in recovering their non-performing assets. अब ये recovering agents का काम क्या होता है पता है? They do वसूली from Mr. A. वसूली का टास्क है from Mr. A. And they literally on call. See, recovery agents, I have done the audit of recovery agents during my internship period, so I know how it works. You feel that you are sitting in a call center. Regularly, they just call the bank's customer, and जो धमकी देते हैं ना, literally they give धमकी on phone कि we know at what time you leave from the house. We know at what time your child goes to school. We know at what time he returns back. We know when your wife goes out of the gate of your building for buying veggies, for buying groceries. So please make the payment, otherwise आपके साथ बुरा, आपकी फैमिली के साथ बुरा हो सकता है. This is how they literally call and धमकी देते हैं to customers of bank. ठीक है. Now the only point over here is, will these recovery agents do this work free of cost? Will these recovery agents do the collection process from bank's customer free of cost? Can I say they will charge some fees, some percentage of the amount recovered or of the amount collected for bank? Yes or no? So that is nothing but collection fees. That is nothing but collection cost, collection fees. So can I say ये collection fees बैंक को कब incur करनी पड़ी? जब there was credit sales. Yes or no? Home loan is nothing but a sale product for bank. And can I say loan is always on credit? Are you following? So credit sales hai, so you have to incur collection cost as well. Understood? Everyone? Any doubts? Any questions till here? Last but not the least, credit sales hai. Let's say Vyom Limited is giving 30 days credit to its customers. But kuch customers, ईमानदार customers, they are making the payment on 15th day itself or on 10th day itself. Can I say they will ask for some discount of early payment? Yes or no? They will ask some discounting. कि यार मैं 20 दिन जल्दी पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो. So yes or no? So credit sales है, so there is discounting cost as well. Are you getting this? Everyone. So can I say क्रेडिट सेल्स है तो फायदा एक ही है. फायदा क्या है? इट विल इंक्रीज योर टर्नओवर एंड इन टर्न इट विल इंक्रीज योर प्रॉफिट. बट सामने there would be cost in the form of ABCD. See, I am teaching you English in FM. I am teaching you ABCD in FM. So credit sales hai, be ready to face ABCD. Are you following? Admin cost, bad debts cost, collection cost, discounting cost. So gross benefit minus this cost is nothing but your net benefit. Understood? अब ये net benefit चेक के 20 डेज में ज्यादा है, 30 डेज के क्रेडिट पीरियड में ज्यादा है, 45 डेज के क्रेडिट पीरियड में ज्यादा है, और वॉट एवर इज द क्रेडिट पीरियड गिवन इन द क्वेश्चन. चेक. Calculate gross benefit for each of this credit period. Calculate cost for each of this credit period. Find net benefit for each of these credit periods and select the best one.
जिसमें फायदा, जिसमें नेट बेनिफिट, जो क्रेडिट पीरियड में नेट बेनिफिट हाईएस्ट और मैक्सिमम, कंपनी शुड गो फॉर दैट क्रेडिट पॉलिसी. Followed everyone? Any doubts, any concerns, any doubts in this chart? नेट बेनिफिट क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट नेट बेनिफिट, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स? Okay, apart from ABCD cost, there is one more cost. I will just note down the name over here. उसका मतलब क्या होता है वो मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स जस्ट नोट डाउन द नेम. वन मोर कॉस्ट इज COCD. COCD, कॉस्ट ऑफ कैरिंग योर डेटर्स. फुल फॉर्म है ये COCD का, कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स. दिस इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स. ठीक है. सो मॉड्यूल में COCD को टेक्निकली दे हैव डिफाइंड एज opportunity cost of investment in receivables, but I term it as COCD. Why? Because ABCD के साथ COCD easily link हो रहा है. It gets easy to remember, that's why. ठीक है. So again, क्रेडिट सेल्स है तो फायदा एक ही है, आपका सेल्स बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. बट क्रेडिट सेल्स है तो बी रेडी टू फेस ABCD COCD, ABCD COCD, ABCD COCD. Understood? Now what is COCD we will learn थोड़ी थोड़ी ही देर में, but for now you just understand with credit sales will come ABCD COCD. ठीक है. We have to find net benefit. Once net benefit of different credit period is calculated, after that we will select the best credit policy. Understood till here? Okay. So just like management of working capital or estimation of working capital had assumptions, इस चैप्टर यानी कि रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के भी कुछ assumptions हैं. So let's just see what are those assumptions. They are very simple assumptions, and दो तो आपको already पता है. Number one, again same, all activities accrue evenly throughout the year. Same assumption that we learned in estimation of working capital. Assumption number two, again same, our calculation will be done on annual basis. ठीक है. All calculations will be done on annual basis. And last but not the least, assumption number three, in absence of specific information, sales and purchases are assumed to be on credit. Sales and purchases will be assumed entirely on credit if nothing specific is mentioned in the question. ठीक है. All credit unless otherwise specified. हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि आउट ऑफ द टोटल सेल्स 20% इज कैश सेल्स, तो 20% का तो हमें कुछ देखना ही नहीं है. रिसीवेबल्स मैनेजमेंट comes only when debtors are born. Are you following? So debtors will be born from 80% of the sales in that case. So 80% is only relevant for our calculation. ठीक है, unless otherwise specified. Understood? बोलो, any doubts still here, students? Any queries, any concerns? Clear. Okay. Moving ahead. Again, financial management is all about formats and formulas. ठीक है. तो अगेन हमें तो नेट बेनिफिट ढूंढना है. तो नेट बेनिफिट अगेन वी विल नॉट prepare this arrows and solve and find a net benefit. No, we have to follow organized way of
solving. Presentable pattern, presentable approach. So again, this chapter has format to calculate this net benefit. ठीक है, ऐसे आप एरोस बना के, दो एरोस बना के सॉल्व मत करना, इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन. Our way of solving, our pattern of solving should be organized and presentable. ठीक है, so let's move to the format of this chapter. तो again, benefit means फायदा. So फायदा is linked with profit and loss. Yes or no? फायदा means कितना प्रॉफिट हुआ, नुकसान मीन्स कितना लॉस हुआ. ठीक है, सो हियर वी हैव टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, और वी कैन से स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट. फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, और यू कैन टर्म दिस एज स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट. ठीक है, सो अगेन द फॉर्मेट विल स्टार्ट विथ सेल्स, बट यहाँ पे वी आर इवेल्युएटिंग डिफरेंट, वी आर फाइंडिंग नेट बेनिफिट फॉर डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसीज. तो यहाँ पे कॉलम में आएगा एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी. पॉलिसी नंबर 1 लेट्स से 30 days, पॉलिसी नंबर 2 लेट्स से 45 days, पॉलिसी नंबर 3 लेट्स से 60 days. ठीक है, सो कंपनी इज इवेल्युएटिंग 3 different policies and comparing with existing policy. कंपनी हैज टू सिलेक्ट इस चारों में से कौन सा बेस्ट है फॉर द कंपनी. तो वी नो दैट बेस्ट वन इज दैट पॉलिसी विद दैट जनरेट्स मैक्सिमम नेट बेनिफिट. अब हाउ टू कैलकुलेट नेट बेनिफिट? वी नो दैट इट इज नथिंग बट ग्रॉस बेनिफिट लेस कॉस्ट, बट दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ सॉल्विंग. We have to follow our way of solving, our pattern of solving should be organized. So हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम फॉर्मेट बना रहे हैं हमारे नेट बेनिफिट कैलकुलेशन का. सिंस इट इज एन इनकम स्टेटमेंट, इट विल स्टार्ट विथ सेल्स. सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो वी गेट कॉन्ट्रीब्यूशन. उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यू कैन टर्म दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज EBIT. ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या सिंपल टर्म इट एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट योर ग्रॉस बेनिफिट. ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का पार्ट इज नथिंग बट योर ग्रॉस बेनिफिट का कैलकुलेशन. अब इसमें से हम ABCD माइनस करेंगे. लेस admin cost, less bad debts, less collection cost, less discounting cost, and last but not the least, less COCD. एंड हमारा COCD ऑलवेज वर्किंग नोट से हम कैलकुलेशन करके यहाँ पे अमाउंट लाएंगे, बिकॉज कैलकुलेशन ऑफ COCD विल इन्वॉल्व 2 स्टेप्स. तो 2 स्टेप हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, वो वर्किंग नोट में प्रेजेंट करेंगे. 2 स्टेप वहां कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ पे सिर्फ फाइनल अमाउंट लेके आएंगे. अंडरस्टूड? सो द बैलेंसिंग फिगर विल बी टर्म्ड एज नेट बेनिफिट बिफोर टैक्स. नेट बेनिफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे एंड वी विल गेट नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स. So this is before tax and net benefit after tax. So we have to reach till this point. Understood? फॉर्मेट में कोई डाउट है? फॉर्मेट में इट इज नथिंग बट ग्रॉस बेनिफिट माइनस ABCD COCD. ठीक है, सो ग्रॉस बेनिफिट का सेक्शन इज दिस. सो ये सारे फायदे हो गए, नेट फायदा हो गया, लेस क्रेडिट सेल्स के सारे कॉस्ट, और यू कैन से रिस्क. फॉलोड?
एंड जिस क्रेडिट पॉलिसी में नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा, we will select that one. Everyone understood? So this is how practical problem on learning objective one would come. Evaluating different credit policies, selecting the best one. Best one select करने के लिए आपको net benefit after tax तक का statement बनाना पड़ेगा. So what is how to prepare the format? Just have a quick look and try to remember this. It's very logical. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. You can easily remember this in your mind. Just follow the concepts. Any doubt, students, still here? Any queries, any concerns hitting you? Debtors from credit sales only, वो आगे हम देखेंगे कि डेटर्स को हमें क्रेडिट सेल्स पे वैल्यू करना है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पे करना है. Any doubts still here? Clear, right? So moving forward, till now we understood the assumptions, we understood the format, we understood हमें क्या calculate करना है. ठीक है. Now moving forward, how to find COCD. First of all, what is COCD and how to calculate that? Let's understand that. ठीक है. So let's understand the concept of COCD using illustration, using one example. Example to calculate COCD, cost of carrying debtors, and it is also called as opportunity cost of investment in receivables. ठीक है. I have termed it as COCD, cost of carrying debtors. It is also correct terminology. FM world में ये term use होता है. In many authors book you will see this term, but in our module it is termed as opportunity cost of investment in receivables. Meaning is same, process or the way to calculate is also same. So again, example, let's say example, sales for the entire year is, let's say, 12 lakh rupees per annum. Correct. Current credit period given to my customers, let's say 1 month. Interest cost or return of investment, opportunity cost is, let's say, 12%. Calculate COCD. क्या पूछा है? So these are the facts given in the question. They are asking to calculate COCD. Now how to calculate COCD? Simply follow two steps. To calculate COCD, you have to simply follow two steps. Step number one, calculate the amount of debtors. Calculate the amount of debtors. How to calculate debtors? We already learned in working capital chapter. Can I say debtors is nothing but credit sales into ACP divide by 12, 365, 52. Just check your working capital का फॉर्मेट. उसमें जो डेटर्स कंपोनेंट हमने लिखा था वहां पे फॉर्मूला भी लिखी थी. Are you getting this? Everyone. So step number one, to calculate COCD, we will first
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेटर्स, यस और नो? रिसीवेबल्स मैनेजमेंट चैप्टर में तो पहले रिसीवेबल्स का अमाउंट तो कैलकुलेट करो कितना है. सो स्टेप 1, कैलकुलेट डेटर्स. स्टेप नंबर 2, अप्लाई इंटरेस्ट परसेंटेज और आरओआई परसेंटेज पर एनम ऑन द अबाव अमाउंट कैलकुलेटेड. ठीक है, ये सिंपल 2 स्टेप फॉलो करने हैं एंड यू विल गेट सीओसीडी. नाउ जस्ट बाय अप्लाइंग दिस 2 स्टेप्स, लेट्स कैलकुलेट हमारे रिसीवेबल्स का अमाउंट कितना है. कैन आई से क्रेडिट सेल्स इज 12 लाख इन द प्रेजेंट एग्जांपल. एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 1 मंथ. Yes or no? So can I say मेरा debtors is 1 lakh? So step 1 is done. Calculation of debtors. ठीक है. स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 1 में जो अमाउंट आया 1 लाख, उस पे यू अप्लाई द इंटरेस्ट और आरओआई परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. सो कैन आई से सीओसीडी अमाउंट इज नथिंग बट 1 lakh and my COCD rate, interest rate is 12%. So which comes to 12,000. ठीक है. So by following the 2 steps, by following these 2 steps, your calculation of COCD is done. कैलकुलेशन पार्ट इज डन. कैलकुलेशन के लिए आपको ये सिंपल 2 स्टेप करने हैं. फर्स्ट, अमाउंट ऑफ डेटर्स वो फाइंड करो, उस पे आप इंटरेस्ट रेट सीओसीडी रेट पर एनम अप्लाई कर दो. सो दिस इज योर सीओसीडी अमाउंट विच विल गो इन दिस फॉर्मेट. यहां पे वो अमाउंट आ जाएगा. डन. स्टेप्स क्लियर. बट अब सीओसीडी होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. कैन आई से डेटर्स, ये जो रिसीवेबल्स है, what is receivables ideally? Can I say it is for 1 month? This 1 lakh is getting blocked in my customers. Yes or no? ये 1 लाख, ये एबीसीडी इज नॉट इंक्लूडेड इन वेरिएबल कॉस्ट. ना, वेरिएबल कॉस्ट में सारे ऑपरेशनल रिलेटेड कॉस्ट आएंगे, कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कोर बिजनेस ऑपरेशन. सो वो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट हमने जो यहाँ पे माइनस किया है ना, दिस ऑल आर ऑपरेटिंग कॉस्ट. सेल्स में से अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो ही हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा. एंड एबीसीडी सीओसीडी इज नॉट योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, दिस आर नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट. आर यू फॉलोइंग? सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. Okay, so where was I? I was in debtors. So ये 1 लाख आया. What is this? What does this 1 lakh mean? Can I say 1 lakh is nothing but the amount that is blocked in your debtors? Yes or no? Means कि आज मैंने सेल किया है 1 लाख का, उसका पैसा मुझे 30 दिन बाद मिलेगा, आफ्टर अ मंथ मिलेगा. तो कैन आई से फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month my amount is blocked in the debtors. Now, as a businessman, I cannot afford blocking. I cannot afford even 1 rupee getting blocked in my business. Are you following? मेरे बिजनेस में मुझे स्मूथ बिजनेस चलाना हो अगर, तो 1 रुपया भी बिजनेस में ब्लॉक हो रहा है ना, इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द बिजनेस. तो उस केस में हम क्या करें? 1 लाख तो ब्लॉक हो गया है फॉर 30 days. दिस इज फॉर श्योर. Are you getting this? आज मैंने सेल किया है तो आई विल रिसीव द पेमेंट आफ्टर 30 days, आफ्टर अ मंथ. बट आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मनी गेटिंग ब्लॉक्ड. I cannot afford this 1 lakh getting blocked in my business. Otherwise, मेरा business hamper होगा. For smooth functioning of my business, I cannot afford even a single rupee being blocked. तो अब can I say in other words, मुझे ये 1 lakh आज के आज कैसे अरेंज करने पड़ेंगे? Yes or no? As I told you, I cannot afford getting blocked even for a single day. Even a single rupee getting blocked for a single day is a bad sign for smooth business operations. So can I say 1 lakh जो block हुआ है, I need to arrange from somewhere. Yes or no? तो ये 1 lakh arrange करने के कौन से sources है?
There are two sources. Either I will invest my own funds or either I will borrow. I will ask the bank to fund me this 1 lakh for 30 days. Yes or no? Hey, are you following the flow? ये COCD क्या होता है? I'm explaining that. Steps मैंने बता दिया. How to calculate that, it is clear. Just follow simple 2 steps. Your job is done. But वो होता क्या है? वो 1 lakh क्या है? 12,000 क्या है? Let's understand that. So can I say 1 lakh to arrange this 1 lakh that is getting blocked? I have two options. Either मैं मेरे पास खुद के पास पैसे पड़े हैं. I will invest that in my business. अगर मेरे पास खुद के पास नहीं पड़े तो आई विल बोरो फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्ट इन द बिजनेस. यस और नो? सो अगर बोरोइंग के रूट पे जाता हूं, इफ आई टेक द रूट ऑफ बोरोइंग, कहने से मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. So that interest on the borrowed amount is nothing but your COCD, cost of carrying debtors. मैं debtors को उठा रहा हूं ना for 30 days. I'm lifting up, I'm carrying up the debtors for 30 days. उसका खर्चा है ये. Are you following? And if I'm investing my own funds, तो कहना है ये own funds, मैं कहीं और मेरा फंड ये इन्वेस्टेड होगा. लेट से मैंने ये 1 लाख कहीं और टेम्पररीली पार्क किया था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इक्विटी में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में. कहने से वो सब इन्वेस्टमेंट तोड़ के मुझे बिजनेस में डालना पड़ेगा. सो इन दैट केस कहना से आई विल बी लूजिंग एन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI, somewhere else. Are you getting this? So if I'm investing this 1 lakh from my own sources, I'm foregoing this ROI. So can I say this is my opportunity cost? कई और से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तोड़ के मैं मेरे बिजनेस में डाल रहा हूं, तो कई और से जो मुझे रिटर्न मिलता वो अब नहीं मिलेगा. सो कैन आई से दैट इज opportunity cost, ROI, losing an ROI. Are you following? So that's why COCD is also called as opportunity cost of investment in receivables. Are you following this, students? इंटरेस्ट है तो हम इसको बोलते हैं डेटर्स को उठाने का खर्चा. अंडरस्टूड? सो दिस 1 lakh पे इंटरेस्ट रेट वाज 12%, एंड if I'm investing my own funds, again ROI percentage, my opportunity cost is 12%. Are you following? Say 1 lakh पे 12% I applied and found my COGS, sorry, not COGS, but COCD, or you can term this 12,000 as cost of carrying debtors. Followed everyone? What is COCD? COCD पहले तो आएगा कब? कहना इसे तभी आएगा जब डेटर्स होगा, एंड डेटर्स में अमाउंट ब्लॉक होंगे, एंड एज अ रैशनल बिजनेसमैन आई कैन नॉट अफोर्ड funds getting blocked even for a single day. So for smooth functioning of my daily business operations, मुझे ये 1 lakh जो डेटर्स में ब्लॉक हो चुका है कहीं से अरेंज करना पड़ेगा. तो वो अरेंज करने के सोर्सेस कौन से? तो याद करो, वी हैव प्राइमरीली टू सोर्सेस. वन इज ओन फंड, आइदर आप खुद के पैसे लगा दो और आइदर आप बोरो करके उधारी के पैसे लगा दो. अगर बोरो करके पैसे लगा रहे हो तो दैट लेंडर विल चार्ज इंटरेस्ट टू यू. बट अगर खुद के पैसे लगा रहे हो तो आप कहीं और से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तोड़ के बिजनेस में लगा रहे हो. सो दैट मीन्स यू आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न दिस ROI फ्रॉम समवेयर एल्स. Understood? So that is COCD. Everyone followed? Clear? Gross profit is nothing but an accounting terminology. It is sales minus COGS. And यहाँ पे हमने उसको gross benefit. So we are using different terminologies depending on the facts of the chapter.
depending on the facts of the chapter. Okay. So till here, clear, everyone? Any doubts till here? How to calculate COCD? Two-step process. Yeah, again, chat is disabled. What can I do? Yes. So everyone clear with COCD? Okay, now moving forward. A small twist over here. जैसे हमने वर्किंग कैपिटल चैप्टर में देखा कि डेटर्स इफ वी वैल्यू ऑन क्रेडिट सेल्स तो कहना है इसमें तो प्रॉफिट एलिमेंट भी आ गया. Yes or no? So actual amount blocked in debtors is not my sales ka amount. Actual amount, can I say the amount that is actually blocked in debtors is my cost of sales? Correct? Yes or no? So here in this chapter, you have to value debtors on cost of sales. यानी कि total cost. Are you following? And not on credit sales. हाँ, अगर cost की कोई information नहीं दी है, then you can value the debtors on sales in that case. But if cost data is given, cost data का मतलब है, I am talking about this variable and fixed cost. These are operating cost of the business. So मैं इसकी बात कर रहा हूँ. Not ABCD, not non-operating cost. So if variable cost and fixed cost details are given in the question, then value the debtors on this total cost. Followed. If details of cost is not given in the question, value the debtors on sales. Okay? Because we want to know the amount blocked in debtors. The amount is blocked in the cost and not on the profit element. Are you following? It is something over and above the cost. So the actual amount blocked in debtors is only your cost. So here also in this chapter, we will value the debtors on cost of sales. That is the total cost. So let me just write down a very important point. Important note for valuing debtors. Number one, priority one. I would say priority one. Value the debtors on total cost. Means nothing but cost basis, following the cost basis. Total cost कैसे आएगा? Total cost is nothing but variable cost plus fixed cost. सारे ऑपरेशनल कॉस्ट लेना है. सो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. And then if no details on cost is given, then we have no option but we need to value the debtors on sales. ठीक है? In absence of total cost information, debtors will be valued on sales. Debtors will be valued on sales. You are not on total sales, only on credit sales. Don't forget this. Debtors का जन्म credit sales है तो ही होगा. Cash sales में तो नहीं होगा. So priority one you always give that you always give to the total cost. But total cost की information नहीं दी है, then you value the debtors on sales. अच्छा सर, टोटल कॉस्ट में मान लो फिक्स्ड कॉस्ट, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की डिटेल्स दी है, फिक्स्ड कॉस्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो यू वैल्यू द डेटर्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है? फॉलोइंग. सो जस्ट सी द क्वेश्चन, which information, which cost are given, and value the debtors or calculate the debtors accordingly. Followed everyone? Any doubts, any concerns? So this is very important note.
clear. Navneet, clear. Gayatri, clear. Okay. Okay. So students, Diya, clear. Okay. Okay. So yes, so this was all about learning objective number one. Very quick go through of learning objective number one. In learning objective number one, we have to evaluate different credit policies and select the best one वो पॉलिसी होगी जिसमें नेट बेनिफिट सबसे मैक्सिमम होगा. नेट बेनिफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इट इज नथिंग बट ग्रॉस बेनिफिट माइनस कॉस्ट. ग्रॉस बेनिफिट माइनस कॉस्ट का फॉर्मेट इज द स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट. ठीक है. सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एबीसीडी सीओसीडी. व्हाट इज सीओसीडी? आई एक्सप्लेन्ड यू. इट इज नथिंग बट amount that was blocked in debtors was funded from either of own funds or from borrowed funds. अगर borrowed funds है तो we need to pay interest on that funding that was blocked in the debtors. अगर own fund है तो there will be an opportunity cost that need to be applied on the amount that is blocked in the debtors. ठीक है. So operating profit less ABCD COCD will give you net benefit before tax. अगर tax है तो tax minus करो and find net benefit after tax. अगर tax नहीं है then stop your calculation at net benefit before tax. ठीक है. If there is no taxation. Assumption all activities accrue evenly throughout the year. All calculation will be done on annual basis. And number three, in absence of specific information, all sales, all purchases will be considered on credit basis. ठीक है. How to calculate COCDs? Simply follow two steps. Step one, first find the debtors using the formula that we have learned in ratios, estimation of working ratios, and even in estimation of working capital. Once the amount of debtors is found, you apply the COCD rate given in the question, and since our calculation is annual basis, हम per annum ही rate apply करेंगे. Very important note, debtors we will value on total cost. If total cost information is not given, then you value the debtors on sales. ठीक है. With this background, let's take some illustration and get better clarity on learning objective number one. So if you see the format in the module, this amount will come same. Format mein internal there is difference, but the final answer, the net benefit will come same. So it's very simple. Let's say from Gujarat to Delhi, मुझे दिल्ली जाना है तो मैं वाया राजस्थान भी जा सकता हूँ, मैं वाया एमपी यूपी भी जा सकता हूँ. सो यू कैन नॉट से सर ये आपने रूट गलत लिया है, राजस्थान वाला रूट गलत लिया है. एवरीथिंग इज सेम अंटिल द टाइम यू रीच योर फाइनल डेस्टिनेशन. ठीक है. हाँ, आप दिल्ली के जगह कश्मीर पहुंच गए तो दिस इज तो फॉर्मेट में गड़बड़ है. बट आपको दिल्ली जाना है, आपने राजस्थान का रूट लिया है और कोई और पर्सन यूपी एमपी का रूट लेते हैं, बट बोथ आर रीचिंग दिल्ली ओनली, देन इट इज फाइन. ठीक है. I try to simplify my formats so that students को भी easy रहे और मुझे भी calculation के लिए easy रहे. But this net benefit format is nothing but, you can say, this format. Statement of net benefit. Final answer same आएगा, don't worry in that. So let's see illustration number. पहले एक easy question करते हैं. Let's see that. Illustration number 13. XYZ Corporation is considering relaxing its present credit policy and is in the process of evaluating two proposed policies.
तो कहना इसे इस क्वेश्चन में there are in turn three policies under discussion. One is our present, that is existing policy, plus the two proposed policy, option 1 and option 2. Currently, the firm has annual credit sales of 50 lakhs and accounts receivable turnover ratio of 4 times. This is accounts receivable turnover ratio. तो कहना है इसे हम अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की हेल्प से एसीपी फाइंड कर सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड कर सकते हैं. यस और नो? बिकॉज टू कैलकुलेट सीओसीडी वी वुड नीड एसीपी. यहाँ पे देखो एसीपी चाहिए हमें, तो कहने से टर्नओवर रेशियो से पहले हमें एसीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन वी वुड बी एबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स. The current bad debts loss is 150. Firm is required to give a return of 25% on investment in new accounts receivable. So this is nothing but ROI of 25%. So it means your opportunity cost is 25%. Variable cost of the company are 70% of the selling price. ठीक है? Given below, ये तो fixed cost कितना होगा? If variable is 70%, तो fixed cost कितना होगा? 30. Okay, Kuldeep saying 30. What is the opinion of other students? In the present question, variable cost is 70%. So how much would be the fixed cost? 30%. Linga 30%. Navneet 30%. A. There would not be any fixed cost. अगर आप सेल्स का 70% वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हो एंड इफ यू आर अज्यूमिंग बैलेंस 30% इज फिक्स, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो हो गया. तो इज दिस लॉजिकल? दिस इज नॉट एन अजम्पशन, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड अजम्पशन कि वेरिएबल 70 है सेल्स का तो फिक्स कॉस्ट 30 होगा. तो व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेफ्ट देन? So here there is no fixed cost की information given, so we have to ignore. Are you following? Don't blindly just play with the number. 70 variable तो 30 fixed. Illogical ना? If sales का 70 is variable, sales is 100, 70 is variable, तो 30 fixed, तो operating profit 0. Is this rational to assume this? ठीक है? So no information on fixed cost, we will ignore that. Given the following information, identify which is the better option. So can I say they are asking us to evaluate different policies and we have to select the best one. Understood? So let's see how to solve problem on receivables management. This is illustration number 13. Okay, so there are three policies under consideration. One is present, one is option 1, option 2. See how do I present ACP. Can you tell me what would be the ACP for present policy? The present accounts receivable turnover ratio is 4. So can I say ACP, average collection period, is nothing but 12 divided by turnover ratio. If you remember the chapter of financial ratios. याद है ना? 12 divided by turnover ratio will give you collection period. Yes or no? Three months, correct. So 12 divided by 4 times. So this comes to 3 months. Likewise, for present policy 1, can I say the turnover ratio is 3 times? So 12 divided by 3, 4 months. So turnover ratio is not your collection period. Both are different. 2.4. So 12 divided by 2.4. करेंगे तो कितना आएगा? 12 divided by 2.4 comes to 5 months.
ठीक है. सो एसीपी इज डन. सर हमने एसीपी क्यों ढूंढा? बिकॉज वी नीड एसीपी in step number 1 of COCD. Now let's prepare the format. Sales less variable cost will give me contribution, less fixed cost FC will give me operating profit. But we know that fixed cost is not given in the question. So हमारे मन से नहीं लेंगे, we will assume at nil. ठीक है. प्रेजेंट सेल्स कितना है? 50 lakhs. Yes or no? The current credit sales, annual credit sales is 50 lakhs. So यहाँ पे मैं 50 lakhs लिख दूं. अच्छा, मेरी क्रेडिट पॉलिसी 3 मंथ से 4 मंथ्स होगी, तो कहना से मेरा सेल्स बढ़ेगा because I'm giving more credit to the customer. So more customers, new customers will join my company. 60 lakhs, 67 lakh 50,000. We know variable cost is 70% of the sales. So can I say this will be 35 lakh? And contribution under present policy would be 15 lakh. This will be 42 lakh. And contribution would be 18 lakhs into 70. This is 47 lakh 25,000. And contribution under option 2 is 20 lakh 25,000. If I subtract fixed cost, which is nil, why nil? Because no information given, I have to assume it as nil. So when I say operating profit 15 lakhs, 18 lakhs, 20 lakh 25,000. अब इसमें से हम ABCD माइनस करते हैं. तो now every time don't write all the cost, don't write admin, bad debts, collection, discounting, COCD. जो क्वेश्चन में वही माइनस करो. Unnecessary don't write all the cost. ठीक है. So let's see, क्वेश्चन में एडमिन कॉस्ट दिया है कहीं पे भी? एडमिन कॉस्ट इज नॉट देयर, so we will not write, just ignore. Bad debts दिया है, bad debts losses are given, so can I say I have to write bad debts. So bad debts is 150. 3 lakh 450. जितना ज्यादा सेल्स उतने बैड डेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. 450. ठीक है. सो बैड डेट्स लिख दिया. कलेक्शन कॉस्ट गिवन, not given, so no need to write that. Discounting cost given, not given, no need to write that. But COCD will always be there. ROI percentage दिया है ना. So COCD we will calculate from working note number 1. After subtracting bad debts and COCD from operating profit, can I say I will get net benefit before tax? But क्या इस क्वेश्चन में टैक्सेशन कहीं पे भी दिया हुआ है? टैक्स इज नॉट देयर. सो कैन आई से यही मेरा नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स बन गया. Followed? So now our only task is to find COCD का value for 3 different options. Followed? Everyone? Rest our format is completely ready. बस COCD ढूंढ लिया, our task is done. Clear till here, students? Everyone? Okay. So let's prepare working note number 1. Calculation of COCD. And we know to calculate COCD, we have to follow 2 steps. Step 1, first calculate the amount that is blocked in debtors. ये पहले कितना पैसा ब्लॉक हुआ है वो तो ढूंढो, क्योंकि पैसा जो ब्लॉक हुआ है उसको फंडिंग करना है. तो फर्स्ट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेटर्स फॉर ऑल द पॉलिसीज. ठीक है. प्रेजेंट, ऑप्शन 1, option 2. How to calculate debtors?
can I say it is actually the debtors is credit sales into ACP, but we are finding the amount that is blocked. तो can I say amount blocked तो cost में होता है. So can I say here our total cost is nothing but variable plus fixed. Variable is 35, fixed is 0. So can I say under present policy, my total cost is 35 lakh. Likewise, for option 1, it is 42 lakh. 42 lakh of variable plus 0 fixed cost. एंड यहाँ पे ऑप्शन 2 में है 47,25,000. We multiply it with our collection period. So collection period is not this turnover. Students do mistake. वो 4/12 कर देते हैं, 3/12 करते हैं और 2.4/12 करते हैं. But this is turnover ratio, not the collection period or not the credit policy. Understood? So present ACP is 3 months. So 3/12, 4/12, 5/12. When I say 35 lakh into 3/12, 8,75,000. 42 lakh into 4/12, 14 lakhs. 47,25,000 into 5/12, 1968,750. Error number 2. ये अमाउंट फाइंड करके स्टूडेंट सब्सटीट्यूट दिस अमाउंट इन सीओसीडी. बट कहना है ये मेरा सीओसीडी का अमाउंट नहीं है. दिस इज द अमाउंट दैट इज ब्लॉक्ड इन द डेटर्स. मींस ये पैसे मैं रेस करूंगा. कहना है सीओसीडी उस पे इंटरेस्ट परसेंटेज होगा. सो दिस इज एरिया नंबर 2 वेयर एरर हैपेंस. स्टूडेंट्स in order to solve very quickly, they take this amount as COCD. But this is just step 1. Step 2 में आते हैं. Step 2, apply ROI percentage per annum that is calculated on the amount blocked in step 1. So present, option 1, option 2. ROI percentage 25% given. So my COCD amount under present policy, can I say it will be 875 into 25%? Under option 1, it would be 14 lakh into 25%. And under option 2, it would be 47 lakh 25,000 into, oh sorry, not 47 lakh. It was 19 lakh 68,750. into 25%. ठीक है. So 8. So this is 492,188. 875 into 25%. 218,750. 14 lakh into 25%. 3,50,000. ठीक है. सो फ्रॉम वर्किंग नोट 1, नाउ दिस अमाउंट इज माय सीओसीडी. पैसा कितना ब्लॉक था वो अरेंज कर लिया. वो अरेंज पे कितना परसेंट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो अप्लाई करके आई फाउंड माय सीओसीडी अमाउंट. ठीक है. So 218,750, 3,50,000, 492,188. So can I say my net benefit under option 1 is operating profit of 15 lakh minus 150 minus 218,750. 11,31,250. For option 1, sorry, this was for present policy. A net benefit under present policy comes to 11,31,250. For option 1 comes 1150. For option 2, alternative 2, it comes to
minus 450 minus 492 188. 1082 812. Can I say maximum net benefit is giving credit policy of 4 months. Option 1 is generating maximum net benefit. Can I say we will select option 1, that is company should give credit of 4 months. So last में we will advise the company. Decision लेना है ना, we are taking decision in this chapter. So our decision is company should go for alternative 1, that is giving credit of 4 months, as it generates maximum net benefit to the company. Followed? So देखो आंसर सेम आया. I told you at the end दोनों फॉर्मेट will reach you to destination of Delhi. ठीक है. Now how they have calculated opportunity cost of debtors, you follow these 2 steps, आंसर सेम ही आएगा. ठीक है. So looking at this formula, you will feel little complicated, but आप 2 स्टेप फॉलो करो, ये सब फॉर्मूला में आ गया. I have tried to simplify the formula. So can you see over here? This is nothing but COCD amount. Any doubts, students? Any queries? Any concerns? Yes. So this is, I try to prepare the format in simplified way so that याद रखने में भी easy रहे. Policy option 1. बोलो, any doubts in this question, students? Any queries? Why fixed cost? Because no information is given. कौन सा आप ऐसी मंथ का 1 लाख आप नहीं ले सकते हो, कोई भी अमाउंट फिक्स्ड कॉस्ट का नहीं ले सकते हो कि लेट्स जस्ट टेक 1 लाख, लेट्स जस्ट टेक 5 लाख. नो, कुछ इंफॉर्मेशन हो तो लेंगे ना. सो डज क्वेश्चन प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन ऑन फिक्स्ड कॉस्ट? चेक. कहीं पे भी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हिंट कुछ दी है क्या? चेक द क्वेश्चन. दिया होगा तो वी विल टेक, नहीं दिया है तो वी विल इग्नोर. एज सिंपल एज दैट. इन सम क्वेश्चंस यू विल सी वेरिएबल कॉस्ट भी की भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. तो कहना है माय सेल्स विल ओनली बी माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन दैट केस. यस और नो? उस केस में सेल्स ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जाएगा एंड डेटर्स वी विल वैल्यू ऑन सेल्स. अरे why 30% not taken? Okay, let me just explain you. Under existing policy, sales is 50 lakh. Variable cost 70% है, means 35 lakh. Now you are saying sir take fixed cost 30%. तो कहना है से 15 लाख आ गया. तो कहना है से ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी नील, विच इज वेरी इलॉजिकल assumption कि आप बिजनेस में कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर रहे इन एनी ऑफ द पॉलिसी. व्हाट इलॉजिकल assumption you are taking? हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट हैज टू बी लोअर देन दिस, वरना सेल्स में वेरिएबल इज 70, बाकी का फिक्स्ड कॉस्ट, तो कभी आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा ही नहीं. नेवर इन योर लाइफ इफ यू टेक दिस इलॉजिकल assumption. कोई भी साल में प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा. सो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग द पॉलिसी आई वुड सजेस्ट कि कंपनी बंद कर दो. आर यू फॉलोइंग?
नो नीड टू इवेल्युएट द पॉलिसी. इफ यू फॉलो दिस अजम्पशन तो आपको कंपनी बंद कर देनी चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट 70% सेल्स का, बाकी का फिक्स्ड कॉस्ट. तो एवरी टाइम दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी जीरो in all the years till lifetime. तो कहने से दिस इज वेरी इलॉजिकल assumption कि फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल 70 है तो बचा फिक्स्ड कॉस्ट. वेरी इलॉजिकल. थिंक रैशनली. फॉलोड आदित्य. थिंक लॉजिकली एंड थोड़ा रैशनली. इज इट पॉसिबल? ओके. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. After solving this illustration, we will move to factoring. Come to page number 16. Sorry, 9.96. Illustration 16. Everyone, page number 9.96, illustration number 16. इसमें फिक्स्ड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी है. So we will see how to deal with fixed cost as well. बाकी का format will remain same. Mosaic Limited has current sales of 15 lakhs per year. So can I say under present policy, Mosaic Limited का sales is 15 lakh. Cost of sales is 75% of sales. So my cost of sales, can I say 15 lakh का 75% हो गया? And bad debts is 1% of sales. नाउ इस कॉस्ट ऑफ सेल्स का आप अजम्पशन ले सकते हो कि अगर वेरिएबल 80 है तो बाकी का फिक्स्ड होगा. आर यू गेटिंग दिस? बिकॉज वेरिएबल एंड फिक्स्ड आर कॉस्ट, तो उसको हम रिलेट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट के साथ ही कर सकते हैं, सेल्स के साथ डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं. आर यू फॉलोइंग दिस? सो वंस दिस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज फाउंड, देन दे हैव टोल्ड कि 75% जो है उसका दो ब्रेकअप है, 80% वेरिएबल, 20% फिक्स्ड. Following, and company's required ROI is 12%. Mosaic currently allows 30 days credit. Oh, so can I say this is present credit policy of 30 days? But it is considering that this 30 days का credit अब 60 days हो जाए. So can I say इस question में there are only two policies under consideration. One is existing and one is option 1. Existing में ACP is 30 days and option 1 में ACP is 60 days. ऑप्शन 1 बोलो या प्रपोज्ड पॉलिसी बोलो, वन एंड द सेम. Getting this clarity? It has been estimated that change in policy will increase the sales by 15%. मतलब कि अगर मेरा सेल्स अंडर प्रेजेंट पॉलिसी इज 15 lakhs, तो अंडर द न्यू पॉलिसी दैट इज प्रपोज्ड पॉलिसी इट विल बी 15 lakh plus 15%. Are you following? My sales will increase. So this is the very लॉजिकल कि अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ाओगे तो आपका सेल्स भी बढ़ेगा. सो कैन आई से माय सेल्स अंडर ऑप्शन 1 वुड बी 17,25,000. इसमें हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से वी विल सबट्रैक्ट ओनली दोस कॉस्ट दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन. कॉस्ट में एडमिन कॉस्ट कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, सो वी विल इग्नोर दैट. बैड डेट्स दिया है, सी बैड डेट्स इज 1% अंडर करंट पॉलिसी.
But under new policy, bad debts will increase from 1% to 4%. ठीक है? Evaluate and see which policy you should select. Assume 360 days in a year. So bad debts आएगा. So bad debts under existing policy would be 15 lakh का 1%. So it will be 15,000. Yes or no? 15 lakh. Bad debts is always on sales figure. It is always on credit sales ka figure. And under proposed policy, it will be 17 lakh 25,000 ka 4%. Which comes to 69,000. Collection cost is not given anywhere in the question. Neither discounting cost is given. So we will not subtract that. Last but not the least, very important, we will subtract COCD. And COCD amount we will get from working note 1. The resultant value is called as net benefit before tax. Is taxation given anywhere in the question? Taxation is also not given. So this is only my net benefit after tax. Followed? So we have to just complete this statement now. Okay. So variable or fixed cost के related क्या information बोली है? So they have said that variable and fixed cost are based on cost of sales. ठीक है? Calculation of cost of sales. Can I say cost of sales is nothing but sales का कितना परसेंट बोला है? 75%. Yes or no? Sales का 75%. So can I say under my existing policy, cost of sales will be how much? Cost of sales will be, can I say 15 lakhs का 75%? Yes or no? Which comes to 11 lakh 25,000. And ये 11 lakh 25,000 का they have given two breakups. कि ये 1125 में से 80% is variable cost, 20% is fixed cost. Everyone following this? This is how the ratios, how the bifurcation is given in this illustration. So can I say this comes to 9 lakh and this comes to 2 lakh 25,000. Yes or no? Under existing policy. So 9 lakh minus कर दूंगा. So this comes to 6 lakh. This will be 2 lakh 25,000. So my operating profit. See now operating profit will not be zero. आप जो प्रीवियस क्वेश्चन में assumption बोल रहे थे ना 70% वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स, तो बाकी का 35% फिक्स्ड कॉस्ट ऑन सेल्स. Now can you see it seems to be illogical, but इस क्वेश्चन में अब सही है. So 3,75,000. Under proposed policy. Under proposed policy. Now, can you tell me, see, variable cost is 9 lakh, correct? And my total sales under existing policy is how much? 15 lakhs? Yes or no? यही देख लो आप. 15 lakh is my total sales and variable cost is 9 lakh. So can you tell me what is the variable cost to sales ratio? Can I say वही ratio हम यहाँ पे apply कर सकते हैं? So variable cost to sales ratio is 60%.
This is 60% of sales. Yes or no? So can I say my contribution PV ratio comes to 40%? So same, what is variable cost? Variable cost is that cost which varies with sale. So can I say a proposed policy option one में 17,25,000 का 60%, that is 10,35,000 will be my variable cost, and 40% of 7,25,000 will be my contribution. Understood everyone till here? So this is 60% and balance 40%. Followed? And can I say fixed cost will not change irrespective of your sales? आपका सेल्स 15 लाख से जीरो भी हो जाने दो, fixed cost will remain as it is. So here students do mistake. Are you getting this? यहाँ पे students mistake करते हैं. But we should follow the basics that fixed cost, मेरा sales 1 crore भी हो जाने दो, this will remain same in all the policies. Are you following? Existing हो, option 1 हो, option 2 हो, fixed cost never changes unless fixed cost के बारे में specific information दी हो. Let's say in this question उसमें बोला होता कि fixed cost will increase by 10%, तो हम यहाँ पे 225 पर प्लस 10% करते हैं. But if no such increase decrease information on fixed cost is given, you have to take it as it is. Are you getting this? So when I say operating policy or sorry, operating profit under option 1 is 4,65,000. ठीक है? Bad debts is given 50, not given, but we already calculated 15,000, 69,000. Understood? Now working note number 2. Working note number 2 say we will calculate COCD. Working note number 2. Calculation of COCD. Again, two-step process. Step 1. Calculate the amount blocked in debtors. ठीक है? So under existing policy, what is my amount of debtors? We will calculate that. Under option 1, debtors क्या आ रहा है? We will check that. Can I say debtors to be valued on total cost of sales? What is the total cost of sales under existing policy? 9 lakh of variable plus 2,25,000 of fixed cost. 11,25,000. We will multiply it with ACP. We have to assume 360 days in a year. So my amount of debtors, amount blocked in debtors is coming to rupees 93,750 under existing policy. Under option 1, how much is my cost of sales? Can I say 10,35,000 of variable cost plus fixed cost of 225, which comes to 1260. And ACP under option 1 is 60 days into 60 divided by 360, 2,10,000. Again, this is just completion of step 1. To calculate COCD, we have to apply ROI percentage as well. So apply ROI percentage per annum. Existing option 1. 93. I will fund this through my own sources and my opportunity cost is how much? 12%. Under option 1, I will fund 2,10,000 from my own sources and my opportunity cost is 12%. 25,200.
11,250. Everyone clear in this COCD part? The area of error was this. Fixed cost B change हो जाता है students का under option 1. But you have to stick to the basics of fixed cost. So 15,000 and 11,250 will be subtracted from 3,75,000 of operating profit for existing policy. 348,750. This comes to 465. 465 minus 69 minus 25. 3,71,000. So maximum net benefit is generated by the new proposed policy. So we will go for 60 days ka credit. Advice. Since net benefit is maximum under proposed policy, company should go for, can I say proposed policy में 60 days का credit था, company should go for 60 days credit terms. Followed everyone? Any doubts? Any clarity? So what is this? Oh sir, 22,050 क्या आ रहा है? 22,050 is nothing but difference between 371 and 348. Are you following, students? Incremental. So this is also correct way of solving. आप ऐसे करोगे आपका आंसर सही आएगा. Don't worry. Now, so this was evaluation of credit policy following total basis. But there is one more approach to evaluate this different credit policy and selecting the best one. वो अप्रोच कौन सा है? इंक्रीमेंटल अप्रोच. आर यू फॉलोइंग? सो अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन में अप्रोच फॉलो किया, दैट वाज टोटल अप्रोच कंसीडरिंग ऑल द अमाउंट्स. बट देयर इज वन मोर अप्रोच टू गेट द सेम डिसीजन यूजिंग इंक्रीमेंटल अप्रोच. ये इंक्रीमेंटल अप्रोच नाम में ही है. क्या होगा इंक्रीमेंटल अप्रोच में? टेल मी, क्या होगा इंक्रीमेंटल अप्रोच में? व्हाट डू यू थिंक? Incremental approach would consider which all values? Just think and tell me. बोलो. Can I say incremental is nothing but just the difference? Incremental. Can I say अगर मैं इस केस में आपको incremental sales पूछूं तो can I say incremental sales is nothing but 725 minus 15 lakh. Correct? अगर incremental variable cost पूछूं तो it is nothing but 1035 minus 9 lakh. Incremental operating profit पूछूं तो it is nothing but 465 minus 365. So in that case you have to just write the incremental values, the differential values. Are you following? So that approach is called incremental approach. Followed everyone? So आपको सब as if कि और एक कॉलम बनाना है, और एक कॉलम में क्या आएगा? इंक्रीमेंटल का कॉलम. Are you following? Everyone. So incremental sales would be 2,25,000. Incremental variable cost would be minus 1,35,000. So आपका incremental contribution 90,000 आएगा. There will be no increment in fixed cost. तो आपका incremental profit आ जाएगा 465 minus 375. 90,000. Are you getting this? So just
इंक्रीमेंटल बैड डेट्स आ जाएगा. जस्ट प्रिपेयर एन एडिशनल कॉलम विद द हेडिंग इंक्रीमेंटल अमाउंट. ठीक है, और सबका इंक्रीमेंटल difference. Incremental is nothing but differential amount. Following everyone. So this you have to follow. 1260. It is nothing but what is my total cost? Can I say total cost is 1035 of variable cost plus 225 of fixed cost. So ऐसे 1260 है total cost. ठीक है, बट इन एब्सेंस ऑफ एनी अप्रोच गिवन इन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि विच अप्रोच टू बी फॉलोड. सो यू कैन फॉलो टोटल अप्रोच एज वेल. इट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. हाँ, क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशंस दैट यूज इंक्रीमेंटल अप्रोच, देन डोंट क्वेश्चन द क्वेश्चन, just follow incremental approach and solve. But if question is silent, you can go for any approach. But I would highly suggest go for total approach. It is very simple and clear. So with this, we complete learning objective number 1 of this chapter, that was evaluating different policies and selecting the best one. Now, moving forward, learning objective number 2, factoring. वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो प्लीज पे अटेंशन. हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म बिफोर? फैक्टर, फैक्टरिंग सुना है क्या होता है? कभी भी लाइफ में सुना है एट लोअर क्लास और एट फाउंडेशन लेवल? नो. Factor acts as an agent. हाँ, factor acts as an agent, that is correct. But agent in which service? Agent in buying or selling of goods, discounting or collection? If question specifies, then we will take it. If question has not mentioned any information on discounting and collection, we have to ignore. Yeah, if incremental value is if total value or incremental value. If incremental value is negative, you will go for the existing policy. But if incremental value is positive, it means you are generating incremental profit by going for proposed policy. Factor acts as an agent, that is correct. But agent in which service? So factoring is similar to outsourcing process. Similar to outsourcing process. सर, ये outsourcing क्या होता है? Let me give you a very simple practical example and what I have also done practically. There are multiple firms in USA. There are multiple accounting tax consultancy firm in USA and they are called as CPA firms. वहां सीए नहीं बोलते, वहां सीपीए बोलते, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं, वहां सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स बोलते हैं. एंड इन इंडिया एज वेल देयर आर मल्टीपल सीए फर्म्स. ठीक है. अब यूएस में क्या होता है पता है? यूएस में व्हाट हैपेंस, यू नो, यूएस के सीपीए फर्म्स के पास डिफरेंट इंडस्ट्री के क्लाइंट्स आते हैं कि डू माई अकाउंटिंग, डू माई टैक्सेशन, प्रोवाइड मी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, डू बजटिंग फॉर मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ इफ दिस यूएस सीपीए फर्म्स यूएस में ही काम कराते हैं अपने ही यूएस सिटीजन से, so let's say they have to pay minimum of, let's say,
$65 per hour. सो अगर यूएस के ही एम्प्लॉयज, यूएस के ही ग्रेजुएट्स को हायर करके ये सब सर्विस दे कंसल्टेंसी की, तो दे आर फेसिंग द कॉस्ट ऑफ $65 पर आवर. बट कैन आई से ये सब काम यूएस का अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, इवन आर इंडियन सीएस कैन डू. Yes or no? Even we are competent enough. I would say Indian CAs are more competent than US के CPAs because I have experienced it personally, so I know that. तो what do CPA firms do? ये जो clients आ रहे हैं ना different industry के with different requirement of services, वो सारे काम CPA firms Indian CA को outsource कर देती है. What do they do? Outsource them. Means कि Indian CA firms will do all the accounting work of these clients. Indian CA firms will file tax returns for these clients. Can I say Indian CA firms will charge some fees to CPA firms? फ्री में नहीं करेंगे. And Indian CA firms के पास से अगर काम करवाती है तो CPA firms का कॉस्टिंग एवरेज $15 पर आवर हो जाता है. Are you getting this? Because India is a cheap source of labor. तो सर इसमें सीपीए फर्म को क्या फायदा हुआ? ये कहना है से इंस्टेड ऑफ पेइंग $65 पर आवर टू देयर ओन सिटीजन्स, इंडिया से काम करवाते हैं तो वही काम $15 पर आवर में हो जाता है और काम की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है बिकॉज ऑफ मोर कॉम्पिटेंसी. एवरीवन फॉलोइंग? अच्छा, इंडियन सीए फर्म्स को सर क्या फायदा? ये कहना है पर आवर इंडियन सीए फर्म्स को डॉलर में अमाउंट मिल रहा है, मींस 15 into 90 रुपीज, एंड वही काम कोई इंडियन क्लाइंट के करते तो उतना पैसा नहीं मिलता. Are you getting this? Because Indian clients, again, they are very miser in payment of fees. So win-win situation for both the consulting firms. इंडिया में भी इंडियन सीए फर्म्स को फायदा हो गया. दे आर गेटिंग मोर मनी कंपेयर्ड टू व्हाट दे हैव गॉट इफ दे हैव डन द सेम टास्क फॉर इंडियन क्लाइंट्स. एंड यूएस वालों को क्या फायदा हो गया? सस्ते कॉस्टिंग में they could get better quality work. Followed? So this is the process of outsourcing. Any doubts in what is meant by outsourcing process? तो सर इसमें रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और फैक्टरिंग का क्या लेना देना? तो फैक्टरिंग इज दिस आउटसोर्सिंग प्रोसेस ओनली. फैक्टरिंग में अब जस्ट सिचुएशन इज डिफरेंट. वन इज कंपनी के कस्टमर्स. सी, कंपनी अगर कंप्लीटली कलेक्शन प्रोसेस, रिसीवेबल्स प्रोसेस में ध्यान देने लगे तो इट वुड नॉट बी एबल टू फोकस ऑन इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशंस. See, doing sales is one thing, doing or getting more sales is one thing, but timely collection of sales amount is equally important. Are you getting it? सिर्फ सेल्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल से पैसे कलेक्ट करना टाइम पे इज इक्वली इंपॉर्टेंट. नाउ कंपनी डज नॉट हैव टाइम टू डू दिस कलेक्शन प्रोसेस. Why? Because it wants to focus on its core business competency, core business operations. So what will company do? Company will outsource this collection process to a agent called factor. Are you getting this? And factor कंपनी के बिहाफ पे कलेक्शन करेगी. Outsource collection process to factor, and factor will recover or do the collection from customers. Are you following? Now tell me, क्या factor is existing in this world for charity purpose?
or it will charge some fees from this company? Bolo. Can I say factor is collecting, is doing the work on behalf of the company, so they will charge some fees. So that fees is generally a percentage of the collection amount. Let's say 1,000 crore collect किया तो उसका 1% 2% is the factoring fees, or you can say factoring commission. Followed everyone? So will charge factor will charge factoring commission or factoring fees from the company to provide this collection service. Are you following? And this factoring commission will be as a percentage of sales का. Understood? So did you understand how factoring arrangement works? Factoring क्या होता है? Someone rightly told that they act as an agent. But कौन से सर्विस के एजेंट? Can I say collection service के एजेंट? Are you following? So factoring is nothing but a similar to outsourcing process. Outsourcing of which process? Can I say collection process? So factor is India में factor कौन होते हैं? Factor is either a bank or financial institution. Are you following? So factor is nothing but a bank or a financial institution that provides collection service to the company and recovers money from the company's customers. ठीक है? Factor will charge a fee for providing this service called factoring commission or factoring fees. So this is factoring type 1. Factoring arrangement number 1. सिर्फ factor is acting as an agent for collection process. But there are type 2 factor as well. Type 2 factor give additional service, one more service. Type 2 factor, they not only provide collection service to the company, but additionally, जो amount block हो रहा है ना debtors में, they grant advance, they do funding for that amount blocked as well. Granting of advance. Are you following? So type 2 factors, collection service कंपनी के बिहाफ पे तो करेंगे ही करेंगे, but they also provide service of funding, granting of advances that is blocked in the debtors. Are you following? So when I say collection service, for providing collection service, they will get factoring fees. Yes or no? And for granting the advances, granting the amount blocked in debtors, can I say they will charge interest? So यहाँ पे interest on advance आएगा. If the factor is type 2 factor, so type 1 factor, can I say it is nothing but just collection of payment service. Type 2 is collection plus advances. So students, did you understand the meaning of factor and factoring arrangement, how it works? Did you understand that? A granting of advance to whom? Obviously to company ना. पैसे किसके ब्लॉक हो रहे हैं? कंपनी के ब्लॉक हो रहे हैं डेटर्स में, तो obviously it will grant advance to the company. Getting it? And in return they will charge interest. So this is how factoring arrangement works. Now ये जो company and factor के बीच जो agreement होगा ना, can I say all the terms and conditions of factoring arrangement will be noted down in a document, in a legal document. That legal document is called as factoring agreement. ठीक है? So next concept of factoring is factoring agreement.
What do you mean by factoring agreement? All the terms and conditions. All the terms and conditions between the company and factor will be noted down in a legal document on judicial stamp paper called factoring agreement. ठीक है? So can I say factoring agreement में क्या क्या लग रहा है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आइडियली होने चाहिए? कैन आई से फैक्टरिंग फीस कितनी कंपनी फैक्टर को भरेगी, वो एक टर्म्स एंड कंडीशन इसमें आया होगा. आर यू गेटिंग दिस? फिर फैक्टर विल प्रोवाइड विच काइंड ऑफ सर्विस, टाइप 1 सर्विस या टाइप 2, वो भी एक अग्रीमेंट में लिखा होगा. अच्छा, टाइप 2 सर्विस है तो कंपनी फैक्टर विल बी ग्रांटिंग एडवांसेस एज वेल. तो एडवांस पे कितना इंटरेस्ट होगा, दैट आल्सो वुड बी रिटन इन फैक्टरिंग अग्रीमेंट. Yes or no? So all these terms and conditions, how much would be the factoring commission, how much would be the interest if advances are granted, and how much and what kind of service factor will be providing to the company, ये सारे terms, ये सारे clauses factoring agreement में लिखे होंगे. Followed? Now, factoring can be further classified in another two types. अभी तो type 1 was classifying the factoring based on service provided. अब another two types of factoring. One is non-recourse factor, non-recourse factoring arrangement. One is recourse factoring arrangement. One is non-recourse factoring arrangement, one is recourse factoring arrangement. Again, have you heard of this term before, non-recourse and recourse? Anywhere in law? सुना है कभी ये वर्ड, ये टर्म? Anyone? See, non-recourse means, can I say again, just visualize. Factor is providing collection service, correct? So factor ये सब customers को follow up कर रहे हैं, they are collecting on behalf of this company. अब इसमें से कुछ कस्टमर्स पेमेंट नहीं कर रहे, मींस बैड डेट्स हो रहा है. तो बैड डेट्स लॉस हु शैल बेयर? कंपनी शैल बेयर द बैड डेट्स लॉस और फैक्टर शैल बेयर द बैड डेट्स लॉस. So if the factoring arrangement is non-recourse, it means bad debts losses will be borne by factor only. Means factor is insufficient in providing the service. Are you following? That is non-recourse factoring. Bad debts loss will be borne by factor. Means bad debts का responsibility is now not in the head of company. Company will get full amount. कुछ भी लॉस हो रहा है बैड डेट्स के वजह से, फैक्टर you bear that loss if the factoring arrangement is non-recourse factoring. Are you following? So can I say this type of factoring will also be mentioned in this agreement? कि भाई कौन से टाइप का अरेंजमेंट है, नॉन रिकोर्स के रिकोर्स, that also would be mentioned in agreement. Yes or no? And recourse factoring arrangement means bad debts losses, bad debts losses will be borne by company only. So factor के सर पे इसकी जवाबदारी नहीं है. But in most of the scenario,
The factoring arrangements are non-recourse. कहने से अगर recourse factoring होता तो सोचो bad debts की जवाबदारी is on company, तो कहने से factor efficiently काम नहीं करेगा, लेथर्जिक हो जाएगा. ठीक है, पैसा आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कंपनी विल बेयर, मुझे क्या. सो आइडियली इन मोस्ट ऑफ द केसेस द अरेंजमेंट इज नॉन रिकोर्स. फॉलोइंग इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड. सर हमें एग्जाम में कौन सा लेना है, हमें एग्जाम में नॉन रिकोर्स अज्यूम करना है कि रिकोर्स अज्यूम करना है. तो क्वेश्चन विल स्पेसिफाई गो फॉर विच अरेंजमेंट. But if question is silent, again, it is standard assumption that factoring arrangement is non-recourse. Why? Because practical world में this is how it follows. Followed? So if question is silent on the factoring arrangement, then you will assume it is non-recourse. That is, bad debts losses company के सर पे नहीं आएगा, factor के सर पे आएगा. Everyone clear till here? Any doubts? No, we don't need to discount that money. Yeah? We don't need to discount the money. यहाँ पे डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट भी नहीं है. Clear? Okay. So with this background on factoring concept, let's solve problem 1 today, where the only service provided by factor would be collection service. ठीक है? Granting of advance आज नहीं करेंगे. In our next session we will see that. But today the problem will be on this type, collection service. Now factoring question में हमें क्या evaluate करना है? तो factoring वाले question में we have to evaluate simply 2 things. Whether company should continue with in-house collection, means company ही सारा बैड डेट्स बेयर करे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बेयर करे, कलेक्शन कॉस्ट बेयर करे, और कंपनी शुड आउटसोर्स दिस कलेक्शन टू फैक्टर. आर यू फॉलोइंग? सो हमें फैक्टरिंग वाले क्वेश्चन में we have to evaluate whether company should continue with in-house collection process or whether company should avail factor के service, that is collection service. Are you following? किसमें benefit ज्यादा है कंपनी को? We have to see that. Followed? So this is what we don't have to evaluate different policies. We need to evaluate whether company should continue with in-house collection कि उसको outsource करके factor को दे दे, किसमें फायदा ज्यादा है. That we need to see. Understood? Again, before starting practical problem on factoring, very important note, very important note. As per the ICAI's history, whenever factoring questions have appeared in examinations or in RTPs, MTPs, or in anywhere, they have valued debtors on sales. ठीक है? So we will follow the ICAI approach for factoring. We will not value debtors on cost. We will value debtors on sales. ठीक है? This is the pattern that was observed in ICAI. So we will follow ICAI approach. Value the debtors on sales. Let's see if there is any question on factoring. This question is with advance, so we cannot solve this question right now.
Management of working capital. Unit 6. Let's see if there are questions for type 1 factoring, where only collection services are provided by the factors. Let's see that. Oh, no question on that as well. No separate question on type 1 service. In your module, the question is on type 2 service, collection plus granting of advance. Okay, so we cannot continue that question right now because that is a very lengthy question. And granting of advance mein, how to calculate interest on advance grant, that I need to teach you first. So we will be able to continue that in next session. But till now, factoring is done. ठीक है, फैक्टरिंग में कोई डाउट है? Before proceeding with a small concept called forfeiting. Clear, right? So evaluation, learning objective 1, evaluation of credit policies done. Learning objective 2, factoring, understanding the meaning of factoring, different types of factoring, what is factoring agreement, how factoring arrangement works. Understood till here? We haven't solved practical problems. We would be taking in our next session. But till now, any doubts? So next concept is forfeiting. This is a theoretical concept, but it is there in your syllabus. And sometimes theory questions are asked from this. So I'm just explaining you. Okay. Forfeiting. Forfeit. Forfeit. You have heard this term in law. What do you mean by forfeit? Forfeit. Forfeiting is nothing but relinquishing your right. This is a technical term. Relinquish means अपना हक जाने देना. ठीक है? Extinguishing your rights. अपना हक जाने देना. ये आपने लॉ में पढ़ा होगा. यस, इनकम टैक्स में भी अंडर कैपिटल गेन्स. यस, करेक्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, forfeiting is a situation which will arise during import export transactions. ठीक है? First of all, this situation will arise, or forfeiting scenario you will see during transactions of import and export, international transactions. It is nothing but similar to the concept of bill discounting. आपने जो लोअर क्लास में बिल डिस्काउंटिंग समझा है ना, इट इज सिमिलर टू दैट, बट forfeiting is specifically for international transactions, import export transaction. Now how it works, just see. So this is an exporter, importer. ठीक है? Exporter selling goods to importer. Now, can I say export में credit period is very high. अगर आपका जनरली लोकल डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप क्रेडिट पीरियड 30 डेज देते हो, तो एक्सपोर्ट केस में देयर वुड बी 45 डेज 60 डेज का क्रेडिट. इफ यू वांट टू set your business internationally, you have to give more credits. Are you getting this? So exporter sold the goods to importer, and let's say the credit is for on a very higher side, let's say 4 months. Now can I say exporter का तो 4 महीने के लिए पैसा ब्लॉक हो जाएगा? Yes or no? अब 4 महीने के लिए पैसा ब्लॉक होना, a very serious concern for the business operations.
जरा भी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते. सो व्हाट विल एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट? What will exporter request? Exporter request that you go to your bank. This is importer's bank. ठीक है. एंड आपके बैंक पे जाके बोलो कि मेरे नाम का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करे. आर यू फॉलोइंग दिस? सो एक्सपोर्टर इज रिक्वेस्टिंग, हे इंपोर्टर, आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग. हमारा क्रेडिट पीरियड 4 मंथ्स है, आई नो दैट. तो तू 4 महीने के बाद ही तेरे बैंक अकाउंट से पेमेंट करना, नो वरीज. बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तू तेरे बैंक के पास जा एंड रिक्वेस्ट देम दैट दे इशू लेटर ऑफ क्रेडिट इन माय कंपनीज नेम. तो इंपोर्टर ठहरा बोला, he went and he requested an importer's bank issued letter of credit to exporter. अब इंपोर्टर कोई क्वेश्चन आया कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट का तू करेगा क्या. तो एक्सपोर्टर इज वेरी स्मार्ट, ही सेइंग ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो तेरी बैंक ने इशू किया है ना, बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप विद योर बैंक, ये लेटर ऑफ क्रेडिट लेके मैं मेरे बैंक के पास जाऊंगा. आर यू गेटिंग दिस? मैं मेरे बैंक के पास जाऊंगा एंड मेरा बैंक विल फंड मी इमीडिएटली विथ दिस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. आर यू फॉलोइंग स्टूडेंट्स? सो एक्सपोर्टर के हाथ में लेटर ऑफ क्रेडिट आया, एलओसी बोलते हैं. वो एलओसी लेके खुद अपनी बैंक के पास गया एंड बैंक ने सारे एलओसी की ऑथेंटिसिटी चेक करी, वैलिडिटी चेक करी एंड इट फंडेड द अमाउंट टू द एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर को 4 महीने बाद मिलने वाला था. आर यू गेटिंग दिस? फंडिंग इमीडिएटली. बट कैन आई से ये सर्विस एक्सपोर्टर्स बैंक या इंपोर्टर्स बैंक विल नॉट प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट? Yes or no? They will charge certain fees which is called as forfeiting fees or LOC fees. Are you following? तो अब कैन आई से एक्सपोर्टर के बैंक के पास एलओसी आ गई? यस और नो? एंड आफ्टर 4 months एक्सपोर्टर बैंक will show this LOC to importers bank and importers bank will release the payment जो इंपोर्टर को देना था आफ्टर 4 months. ठीक है. सो शो एलओसी टू इंपोर्टर्स बैंक. एक्सपोर्टर बैंक विल से, हे इंपोर्टर बैंक, ये तेरा कस्टमर है जो 4 महीने बाद पैसे देने वाला था. सी लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा है, तो जस्ट सेंड मी द मनी नाउ, 4 months आर ड्यू नाउ. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? एंड इंपोर्टर्स बैंक विल पे टू द एक्सपोर्टर्स बैंक. फॉलोइंग? सो एक्सपोर्टर बैंक ने जो फंडिंग किया था वो फंडिंग रिटर्न हो गया, लोन इज रिपेड. एक्सपोर्टर बैंक ने जो एलओसी की सर्विस दी थी, दे गॉट सम फीस एज वेल. सो दिस एंटायर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज फोरफेटिंग. फोरफेटिंग सर्विस और फोरफेटिंग अरेंजमेंट. आर यू फॉलोइंग? एक्सपोर्टर का क्या फायदा हुआ? एक्सपोर्टर गॉट इमीडिएट फंड्स. सो उसको 4 महीने तक वेट नहीं करना पड़ा टू रिसीव द मनी फ्रॉम इंपोर्टर. एक्सपोर्टर बैंक का क्या फायदा हुआ? एक्सपोर्टर बैंक earned some business fees in the form of LOC fees. Are you getting this? Exporters bank got some business from exporter in the form of providing LOC services. इंपोर्टर का क्या फायदा हुआ? इंपोर्टर का कुछ फायदा नहीं हुआ. इंपोर्टर पेड एग्जैक्टली व्हेन इट वाज ड्यू आफ्टर 4 months. एंड इंपोर्टर्स बैंक का क्या फायदा हुआ? अगेन इंपोर्टर बैंक चार्ज सम फीस फॉर प्रोवाइडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट. सो इंपोर्टर बैंक को भी अपना बिजनेस एक्सपांड करने का मौका मिला. सो दिस इज हाउ फोरफेटिंग अरेंजमेंट वर्क्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एनी क्वेरीज? सो आपके मॉड्यूल में मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स में there is a concept of forfeiting, means relinquishing the right. Can I say here exporter has relinquished its right at this point? जब एक्सपोर्टर को फंडिंग मिल गया, एक्सपोर्टर ने बोला अब ये इंपोर्टर से पैसे लेने का राइट तेरा.
आर यू फॉलोइंग? अब मेरा हक इंपोर्टर पे नहीं है. नाउ दिस राइट आई एम रेलिंक्विशिंग टू यू. वाई? बिकॉज आई गॉट माई फंड्स इमीडिएटली. अब तुझे हक है पैसा लेने का. फॉलोड? सो दिस इज why it is termed as forfeiting. So this is forfeit. Forfeit is relinquishing a right. ठीक है? ये सारी स्टोरी मैंने जो आपको ये चार्ट से समझाई है वो सारी स्टोरी पैराग्राफ में लिखी हुई है. इवन आफ्टर दे इवन हैव ड्रॉन अ चार्ट. ठीक है? An example of forfeiting. Which bank is giving this forfeiting service? To Exim Bank of India's Credit is providing this forfeiting service to the exporters. तो इंडिया में ये एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया बायर क्रेडिट ये फोरफेटिंग अरेंजमेंट की सर्विस देती है. फॉलोड एवरीवन? सो कैन यू सी दिस बिग चार्ट? दिस इज नथिंग बट अ brief chart of this explanation. Any doubts in forfeiting, students? Any clarity you want? Any concerns? Not heard, but now you have heard, and now Kuldeep, it is clear. Yes, exchange loss. See, that is very uncertain. That is about a future uncertainty. So you have to bear with that future exchange gain or loss. See, export import business में ये तो by default ही है. Exchange gain, exchange loss is by default feature. वही इंसान एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में घुसेगा जिसको ये वेरी वेल पता है कि इसमें एक्सचेंज गेन लॉस की सारी संभावनाएं हैं. फॉलोड? सो इट इज अ बाय डिफॉल्ट फीचर. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हियर. Yeah, hedging can be done, and all that hedging principles you will learn at CA final level. Good, at least you are aware. Clear? Okay. So with this we complete forfeiting as well. So now we still have time. Let's just quickly discuss one question on learning objective number 1, evaluation of credit policy and selecting the best one. ठीक है? तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आ जाते हैं यूनिट 6 में. एंड लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस. यूनिट 6. So come to illustration number 11. Illustration number 11. PQR having annual sales of 30 lakhs is reconsidering its present collection policy. At present, the collection period is 50 days. Can I say this is ACP for present policy? And the bad debts are 5% of sales. So can I say current bad debts losses are 30 lakhs into 5%? Yes or no? Company is incurring an expenditure of 30,000 on account of collection of receivables. ये कोई वेट कर रहा था ना सर कलेक्शन कॉस्ट आया नहीं, ये आ गया इस क्वेश्चन में. तो प्रेजेंट कलेक्शन कॉस्ट इज 30,000 ऑन अकाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल. कॉस्ट ऑफ फंड इज 10%. दिस इज नथिंग बट ROI रेट, ROI परसेंटेज, COCD परसेंटेज. Alternative policies, alternative 1, alternative 2. ACP alternative 1 40 days. Presently it was 50 days, but अब 40 days हो गया. Bad debts loss is 4% of sales. And for alternative to 3% of sales. Collection expense 60,000, 95,000. ठीक है? Determine which alternative on the basis of incremental approach
should be on the basis of incremental approach. तो यहाँ पे हमें कौन सा अप्रोच लेना है? इंक्रीमेंटल, नॉट द टोटल अप्रोच. But can I say incremental approach at the end is based on total approach only? Yes or no? दोनों कॉलम तो चाहिए मुझे, प्रेजेंट, ऑल्टरनेटिव वन एंड देन इंक्रीमेंटल की कॉलम बना होगा, एंड स्टेट विच ऑल्टरनेटिव इज बेनिफिशियल. आपने इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करी हो तो प्रेजेंट पॉलिसी का सेल्स दिया है 30 लैक्स, बट ऑल्टरनेटिव वन में कितना, ऑल्टरनेटिव टू में कितना, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? टेल मी, व्हाट सेल्स शैल वी टेक फॉर PQR लिमिटेड अंडर ऑल्टरनेटिव वन एंड व्हाट वुड बी द सेल्स अमाउंट अंडर ऑल्टरनेटिव टू? क्या लग रहा है? Students, what do you think? Can I say we will just compare the cost over here? See, there are two ways. Option one, either you assume sales to be same, assume same sales for option 1 and 2, or alternative 2, way method 2. Method 2, just compare all the cost. Compare the cost and select that policy which has least cost. Are you following? Compare the cost. Now we will not select that policy which has maximum cost. Since we are comparing the cost, we will select that policy which has less cost, the lowest cost. Are you following? Cost mane ABCD COCD, because there is no information on variable and fixed cost. So हम ABCD COCD for present policy calculate करेंगे. So this is existing, alternative one, and then I will prepare incremental का table. Then existing will be compared with alternative two, and again I will prepare incremental का table. ठीक है? So existing to be compared with one, what is the incremental cost? Existing to be compared with two, what is the incremental cost? ठीक है? So can I say I will start from administration cost now? Option 1 is either you assume sales same for all the alternatives. Option 2, no need to find operating profit, just compare the cost and select that policy which has lowest cost. ठीक है? So यहाँ पे bad debts है, admin नहीं है but bad debts है. Bad debts is 30 lakhs के 5% for option 1. So can I say 30 lakhs का 5%? Are you following? For alternative 1, 4% of sales is bad debts, but again sales amount तो है नहीं मेरे पास. So can I say I have no option but to assume that sales will continue to be 30 lakhs. I am handicapped now. I have no specific information. I have to take an assumption over here. Why? Because bad debts for alternative 1, it is mentioned 4% of sales. But alternative 1 का actual sales कितना होगा उसकी कोई information नहीं बताई है question में. So can I say I have no option but to assume 30 lakhs pay 4%. Correct. And for alternative 2, it will be 30 lakh pay 3%. So can I say I will get incremental bad debts? अच्छा, इस क्वेश्चन में collection cost भी है. How much is collection cost under present policy? It is 30,000. How much is incremental cost under collection cost under alternative 1? 60,000.
So can I say incremental collection cost would be 30,000 for policy 1? Yes or no? How much is total collection cost for policy 2? It is 95,000. It is 95,000. So how much is incremental compared to the existing policy? Can I say 65,000 is the incremental? See, these two are alternatives. Huh? So alternatives has to be compared with existing only. Alternatives cannot be compared with alternatives. It has to be compared with existing. Understood? So collection हो गया, discounting नहीं है. Last but not the least, COCD will compute through working note 1. How to calculate COCD? COCD is two-step process. Step 1, calculate debtors. Debtors actually to be valued on cost, but no information on cost is given in this question. कहीं पे भी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो कैन आई से वी हैव टू वैल्यू डेटर्स ऑन सेल्स. एंड हाउ टू कैलकुलेट डेटर्स? सेल्स इनटू एसीपी डिवाइड बाय 365. यस और नो? फिर स्टेप 2, अप्लाई आरओआई परसेंटेज. तो सीओसीडी मिल जाएगा. सो लेट्स से सीओसीडी randomly it is 1 lakh over here, random figures. I don't know the actual one. It is 1,25,000 over here. So can I say incremental cost is 25,000? Yes or no? And let's say it is 1,10,000 for policy 2. So incremental would be 10,000. Followed? So COCD step you have to do it as homework. ठीक है? अब COCD find करना and check incremental cost पॉलिसी 1 में कम आ रहा है कि पॉलिसी 2 में कम आ रहा है. ठीक है? गो विथ दैट. अंडरस्टूड टिल हियर? सो ये ट्राई करना घर पे. आई एक्सप्लेन्ड यू द वे टू सॉल्व. नाउ ट्राई इट एट योर होम एंड सी वेदर यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर और नॉट. ठीक है? पहले खुद से ट्राई करना, फिर सोल्यूशन को देखना. अंडरस्टूड? So with this we end today's session. I hope it added some values in your life, and we will meet again on Tuesday, which would be the last session on this chapter, management of working capital. ठीक है? Okay, tech team, we can end this today's session. Thank you.